की शुरुआत कर देते हैं। तो देव कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप मंगलाचरण कर दें। उसके पश्चात भंडारी साहब का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको सुनेंगे। और मैं तो मतलब ताज्जुब करता हूँ कि भंडारी साहब के पास में इतने आयाम हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो उनका इधर उधर जितना भी देखता हूँ वीडियो तो ऐसा ही लगता है कि मतलब हम तो बहुत ही वो एकदम छोटे से दायरे में ही फंसे हुए हैं। तो बड़ा उपयोगी रहेगा हम सबके लिए। तो देव कुमार साहब आप मंगलाचरण से शुरुआत करें प्लीज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो लोहे सव्वसाहूनं येषो पंच नमोकारो सव्वपापपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम् परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम। बहुत बहुत जय जिनेश धन्यवाद सभी को सादर जय जिनेश जी। जय ने बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द्रव्यों को लेकर के भंडारी साहब प्रस्तुत हुए हैं। और हमेशा आपका एक नया कुछ उसके अंदर मिलेगा, जो भी सुनेंगे एकदम से नया फ्रेश। तो हम तो उत्सुक रहते हैं। तो भंडारी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वो प्रेजेंटेशन टॉक शुरू करें। थैंक यू साहब, आप बहुत सुपरलेटिव में बोलते हैं तो नहीं नहीं साहब, आई जो है फील एम्बैरेस्ड। नहीं नहीं आप ऐसा आप नहीं होएंगे तब भी मैं यही बोलूंगा साहब, ऐसा नहीं है आपके सामने। तो सब को प्रणाम करके सब विद्वानों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। पिछले महीने प्रोफेसर वीर सागर जी ने द्रव्य के बारे में बहुत सुंदर चर्चा की थी, आगम के अनुसार बहुत सरल भाषा में और बहुत क्लियरली हमको बताया था कि द्रव्य क्या है। पर उससे भी बड़ी बात देव कुमारी साहब ने, और गोदावत साहब नहीं है शायद आज, लेकिन गोदावत साहब ने कहा कि जब तक आपको 6 द्रव्यों में 7 तत्वों और 9 पदार्थों में श्रद्धा नहीं हो तब तक सम्यकत्व नहीं होता। तो ये तो मुझे पता था कि जब तक आत्मा में श्रद्धा नहीं हो तो सम्यकत्व नहीं होता, परंतु अजीव में श्रद्धान होना इतना आवश्यक है, थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा था। तो कैसे अजीव में श्रद्धान हो, और जब तक सम्यकत्व नहीं है तब तक मोक्ष नहीं होगा, तो दे आर ऑल रिलेटेड। तो अब इसमें खाली कहने से अजीव में श्रद्धान नहीं होता, ये प्रश्न मेरे मन में उठा। तो मैंने कहा इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो शायद हमारा, अब कोई कहे मेरे को कि अधर्मास्तिकाय है या धर्मास्तिकाय है, तो वो मीडियम ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं, पर उसके कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो जब पानी में जाते हैं, वो पानी की मछली का उदाहरण देते हैं कि वो पानी होता है, वो मीडियम ऑफ मोशन है। फिर हवा में हवा होती है, एटमॉस्फेयर में हम चलते हैं तो वो मीडियम ऑफ मोशन होता है। पर सैटेलाइट जो स्पेस में चलते हैं वैक्यूम में, फिर उनका क्या मीडियम ऑफ मोशन है। तो इसके बारे में कई प्रश्न उठते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो आई कैन बी लिटिल बिट प्रोवोकेटिव, प्लीज फॉरगिव मी। अब खाली लिखने से श्रद्धांजलि नहीं उत्पन्न होता, उसके लिए विज्ञान की मेरे ख्याल से बहुत आवश्यकता है। और दूसरा एक मिथ ये भी फैलाया जाता है कि वो विज्ञान को कुछ पता नहीं है, वो सब शास्त्रों में, वो सब केवल ज्ञान से तीर्थंकर भगवान ने कहा है वो ही सच है। तो आई थिंक हियर साइंस इज ए मीडियम ऑफ नॉलेज। जैसे आपको मीडियम ऑफ मोशन चाहिए मोशन के लिए, वैसे ज्ञान के लिए मेरे ख्याल से साइंस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई विल ट्राई टू शो कि एज फार एज द्रव्य आर कंसर्न, science knows much more than what is written in the agams. That is my understanding. तो अब हम 6 द्रव्यों की बात करें
So can I share the screen here? I think I'll like to show some slides. So this is a sequel to the talk by Dr. Veer Sagar Chain. And when we talk of Dravya, then let us define the real is the basic primary content of the loka, and a real cannot be produced from anything else. That is how I understand the definition of real. कि जो किसी और दूसरे तत्व से या दूसरे द्रव्य से नहीं उत्पन्न किया जा सकता और जिससे लोक में जो फैला हुआ है उसको हम रियल कहते हैं. So let us try in this talk to say what is the scientific view, जैसा साइंटिफिक पर्याय क्या है. तो हम प्रोफेसर वीर सागर जी के 2 स्लाइड से शुरू करेंगे. उन्होंने ये 6 द्रव्य, जीव और अजीव बताए, पुद्गल बताया, और धर्म द्रव्य गति हेतु, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतु और काल द्रव्य परिणमन हेतु. कुछ तो चीज बहुत क्लियर है, ये भी उन्हीं की स्लाइड में एज ए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ विद हिज परमिशन. तो उन्होंने सब कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, और ये उनका क्रिया क्या है, वो निष्क्रिय हैं, क्रियावान है, ये सब बताया. अब प्रश्न ये उठता है कि विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो क्योंकि मैटर, space, time, etc. are as much subject of investigation by Vigyan as much in mentioned in Agam. तो इसका इक्विवेलेंट मैटर का हम पुद्गल ले सकते हैं, परंतु एक्चुअली इट इज नॉट एग्जैक्टली पुद्गल, बट दैट इज द नियरेस्ट. स्पेस को हम आकाश ले सकते हैं. दैट इज अगेन, आई विल ट्राई टू शो दैट द प्रॉपर्टीज what science describes are very different from what is described in our Agam. Or time, isko Vigyan actually does not consider it as a real. It is a mental construct. They say just because of change, we get a feeling of time. तो matter, space और time, तीन में तो करीब करीब आगम और विज्ञान की सहमति है. But when you come to Jeev, Dharma, Astika and Adharma Astika, then there is lot of problem. These three, science doesn't agree or has not done much work. So I would like to say that according to scientific understanding, all 6 dravyas are eternal, coextensive with the universe. Jeev and Pudgal are multiple. There are many actually. But have individual identity. 1 minute. How to shut it off? I don't know. Anyway. You have to do stop screen sharing. हाँ, ये part of it is going down actually. That is the problem. So I cannot shut it. Okay, I'll start again. Sorry about that. What happened to that? Okay, now I got it. They are dynamic. Jeev and Pudgal are dynamic, mutually interactive, and rest all 4 dravyas are facilitators. Sir, you have to share the screen, sir. अभी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, आप भी करिए, आप भी आना जा रहा है. We can see properly.
अभी नहीं आ रहा hexagonal मेरे model of the universe. नहीं सर, यहाँ पे दिख रहा है. आगे सर. थैंक यू सर. Okay, so this is how we understand Akash, Dharma, Adharma are singular, static, homogeneous, uniform, and isotropic. And time has a special property which flows. Now, how do we? I think there is some problem here. Now, छह द्रव्यों की क्या आवश्यकता है? तो इसके दो नियम हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एक लॉ ऑफ exclusivity. Law of conservation says that one cannot produce anything out of nothing, and law of exclusivity says one cannot produce any one real from another real. That's why we require their existence, because one real cannot be produced from any other real. So this is fine. This much all, I think there is no controversy. अब जो जितना काम साइंस में मैटर पर हुआ है उतना मेरे ख्याल से आगम में चर्चा नहीं है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, I will spend more time on matter actually, because that is where a lot of information is available. Matter and energy are the same. So this is the E equal to mc square famous Einstein equation. I didn't find this in the Agam anywhere. And as far as consciousness is concerned, they say it is not a real. That is scientific view. It emerges from matter. And the idea is that when neural network attains a critical degree of complexity that is in the brain, it spontaneously emerges. जैसे अलादीन का चिराग एकदम उसमें से वो निकलता है जीनी, ऐसा हक्सले ने कहा, आल्डस हक्सले ने. तो ये स्वयं उत्पन्न होता है मैटर से, ऐसा वैज्ञानिक अधिकतर मानते हैं. पर तीन चीजें हैं, तीन ऐसे रियल हैं जो आगम में कहीं वर्णित नहीं है. एक तो है फोर्सेस एंड फील्ड्स. तो देयर आर फोर फोर्सेस. ग्रेविटेशन, अब हम इनको नकार नहीं सकते बिकॉज दे कम इन डायरेक्टली इन आवर एक्सपीरियंस. ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड जिससे आप जानते हैं कि एटम बम निर्मित होता है, और वीक न्यूक्लियर फील्ड, दैट इज हाउ द एनर्जी इन द सन इज प्रोड्यूस्ड. सो ये चार फील्ड हैं और विज्ञान इसकी काफी प्रयत्न कर रहा है कि ये शायद चारों कोई एक यूनिफिकेशन थ्योरी है, कोई ग्रेट फील्ड है, उससे उत्पन्न हो सकते हैं. पर इसका कहीं वर्णन आगम में नहीं आता है. और एक हिग्स फील्ड जो है उसकी उसका प्रपोजल है, उसको अभी पिछले दशक में प्रूव किया गया, क्योंकि ऐसा विचार था कि जो मास होती है, जो मात्रा होती है कोई पार्टिकल में, particles are produced massless in the beginning and then they acquire their mass according to Higgs field. So कुछ चीजें तो एग्री कर रही है जैसा मैंने बताया अपने आगमिक वर्णन से, और कुछ चीजें आगमों में वर्णित नहीं है, बल्कि विज्ञान ने हमको उसके बारे में अच्छी जानकारी दी है. तो द मटेरियल यूनिवर्स, इसको दो रिजीम में विज्ञान विभाजित करता है. एक तो है कोर्स जो अपन विजिबल है, जैसे रॉक्स हैं, एटम्स हैं, और माय गॉड, इट इज सेल्फ मूविंग, आई डोंट नो. रॉक्स है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है. These are gross and they follow classical dynamics. And then atom and subatomic particles, like, you know, they have a small dimension, quarks and subquarks, etc. जिस पे अभी विज्ञान काम कर रहा है. तो ये दो भागों में विभाजित किए और इनके नियम बिल्कुल अलग हैं. The course is dominated by or controlled by classical mechanics, that is deterministic.
और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स विच इज प्रोबेबिलिस्टिक। तो इस प्रकार जो है आई डोंट नो, हाँ 62 पार्टिकल्स, विज्ञान बताता है कि 62 पार्टिकल से यूनिवर्स बन सकता है। तो विज्ञान का अप्रोच अलग है, ये इट ब्रेक्स द पार्टिकल्स into smaller and smaller units and then comes to the conclusion कि what is the ultimate atom। और विज्ञान परमाणु से शुरू होकर के और उसको स्कंद बनाते बनाते वहीं पहुंच जाता है जहां पर विज्ञान अभी वर्क कर रहा है। तो 62 पार्टिकल्स है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहूंगा क्योंकि इसका वर्णन अपने आगम में नहीं है। जस्ट टू शो दैट वी नो मच मोर, वी हैव मच बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ because of science rather than just by Shraddhan in the agamic description. So they talk of, there is a standard model of particle physics। इसी बेसिस पे मैंने भी एक प्रयत्न किया है जैन मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स डेवलप करने का। बट लेट अस टॉक ऑफ दिस SMPP, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। There are 3 generations. Quarks have 3 generations. Quarks, so there are down and up quark, strange and charm quark, bottom and top quark। इसी तरह लेप्टॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, they are also 6 in number, and then there are force carriers। So इस प्रकार ये we have 62 particles of visible matter, 6 quarks, 6 leptons and 6 photon is for example carrier of electromagnetic force। और इसको हम तो ये 18 हुए और 18 में हम 6 लेप्टॉन मिला देंगे और उनके एंटी पार्टिकल्स। सो साइंस बिलीव्स इन सिमेट्री, सो फॉर एवरी पार्टिकल देयर इज एन एंटी पार्टिकल, सो दे सम अप टू 48। 3 generation 18 plus 6 24 leptons into 2 particle and antiparticle make them 48। and then gluons which act as carriers of strong nuclear force, and there are 8 of them। Add to these the carriers of electromagnetic force like photons, bosons and Z0 particle, the total number becomes 60। and to this we may add Higgs boson, responsible for giving mass to various particles, and graviton, the anticipated carrier of gravitational field, which is now they claim it has been discovered। so that makes it 62। but there is a big gap between what Parmanus combine and give you, this matter, and what we break down। So people are still working further whether there are sub quarks and so on। So that is where the current situation stands। But परमाणु का description भगवती सूत्र में दिया हुआ है, and here I am quoting Swami Chaitanya Prakash thesis। They say that under certain conditions a parmanu undergoes simple vibrations, complex vibrations, motion, oscillation, collisions, penetration and excitation। that is, it undergoes varied transformations। under other condition it does not undergo simple vibration, complex vibration, motion, oscillation, etc। so there is some uncertainty that it undergoes various phenomena of vibration and motion under certain conditions, and it doesn't undergo these variations under certain other conditions। so very beautifully described। but we have to now connect what is written in Bhagavati Sutra about Parmanus to our what we know scientifically as atom, and that remains as an outstanding problem to bridge this gap। I'll discuss a little bit more about matter। if anybody has any comments or questions, I'll welcome it in between, because this is more of a discussion rather than a talk,
to create some interest in, what are the gaps in our understanding. So science talks of two types of matter, bosons and fermions. And bosons are more like, our Parmanus. The infinite number of bosons can coexist in a unit space. And Satyendranath Bose, who discovered, the properties of bosons. I think sometimes somewhere I have seen the credit is given to Jain Agams. वहां से उनको idea मिला था. I don't know if it is true or not. तो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि it is non-अवरोधक, अवरोध नहीं प्रकट करता है. Any number, infinite number can exist in one single space. Contrary to this, there are fermions named after Enrico Fermi, that every fermion occupies space, and there is a Pauli's exclusion principle that no two identical particles can exist in the same space at the same time. So you see, the whole universe is made of two types of particles, bosons and fermions, and they have different properties. Now, there is one more very interesting thing, that science talks of three types of matter. One is the luminous matter that we see, that is only 4%. Then there is a dark matter which you don't see and is non-interactive, that is about 21%. And then there is this dark energy, which has a repulsive property, and that is responsible for expansion of the universe. And that is the maximum, most abundant, that is about 75%. So what we see is only 4%. So there are more things in the heavens than meet the eye. And what we see or interact with is very small amount. Now, I try to correlate it with our Dvisparshiya, Chatursparshiya, and Ashtasparshiya matter. Ashtasparshiya is what luminous matter we have, and Chatursparshiya is what dark matter we have, and all Parmanus, they fill up the universe, that is dark energy, but it has to, if we want to correlate them with the dark energy, then Parmanus should have a repulsive force acting between them. And I try to write something about it, and Dr. L.C. Jain Saab has sent me some comments on that. He very kindly went through it. Kachara Saab ko bhi bheja tha maine. But I came across this paper by, this book by Annie Besant, where she says how Parmanus are produced actually. That goes even beyond our agams in some way. They say that all the space which we take as empty is actually filled with a substance called ether, which is absolutely superfluid. Superfluid means it doesn't produce any resistance to any motion. This cannot be medium of motion if it is superfluid, because that has to give some friction or some resistance to flow. So this is different from what we call dharmastika, and it is massless, of course. And we can say that the space is densely packed with massless and superfluid particles. Annie Besant further says that the ultimate atoms of matter, that is, she calls them anus, are thought to float on this ether, and their vibrations produce light, heat, and electricity. These three properties, light, heat, and electricity, are attributed to the vibration in these ultimate atoms. And these anus have, sorry about that. These anus have thermal and electric properties and are colored. तो ये तो हमारे आगम में भी लिखा हुआ है कि परमाणु में इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी होती है, वो चार्ज होता है and so on. So, but she in addition postulates, makes two postulates. She says there are two planes of existence.
One plane of existence with which we are familiar is our physical, material, visible world, and the other, not yet scientifically investigated, is the astral, invisible world, which continuously provides the motive force for all events in the physical plane. तो वो क्या कह रही है कि दो ब्रह्मांड हैं, एक हमको जो दिखाई देता है और वो संचालित होता है एस्ट्रल इनविजिबल वर्ल्ड से, जो इसको डोमिनेट करता है। यहाँ जो भी होता है उसका कारण जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में है। And the second postulate she gives it, there is a life force called Fohat, which is a force which produces all the forces of physical plane by differentiation. तो जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में हम कहते हैं कि एक अल्टीमेट फोर्स है जिससे ये चारों फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दोनों न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके लिए उसने 100 साल पहले एक लाइफ फोर्स प्रपोज किया था। इसका नाम उसने फोहट दिया था। तो हो सकता है ये सब सत्य है, बट इनको मिलाने की आवश्यकता है। व्हाट आई वांट टू emphasize is that there's a lot of work requires to be done to connect our agamic thing with other ideas, such as what Annie Besant has given, and some ideas which science has, established. So these three need to be connected, and that is actually why I took upon myself to give this talk. I mean, just to say that ऐसा कहते हैं कि अनंत ज्ञान का खजाना है अपने आगम में, तो उसको अपन सेफ में बंद करके रखने से कुछ मेरे ख्याल से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वी हैव टू कनेक्ट विद द मॉडर्न साइंस instead of just saying that science doesn't know and science is incomplete and so on. So I will now come to some other properties what science has told us, which I find very, impressive and well established. That, as I talked about, two regimes, classical and quantum, that is visible universe and some atomic universe. This is deterministic and this is probabilistic. And nowadays people are working on sub-quantum regime, but I think there is another regime जिसको हम सूक्ष्म कहते हैं। अपने आगम में सूक्ष्म दिया हुआ है। सूक्ष्म का मतलब केवल छोटा ही नहीं है जो दिखाई नहीं देता, बट विच इज नॉन इंटरेक्टिव, जिसको हम देख भी नहीं सकते और जिस पे कोई प्रयोग भी नहीं कर सकते, पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये नहीं पता है। एंड सो देयर इज ए कॉन्शियस regime which also probably exists, and this is an area where work should be done. फिर कई चीजें हैं जिसमें there is a agreement between agams and our scientific understanding. Planck length, we can relate it to pradesh जिसको कहते हैं। Planck time, जिसको हम कालाणु या समय से रिलेट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अल्टीमेट एटम जिसको हम परमाणु से रिलेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस आई ट्राई टू डेवलप समथिंग कॉल्ड जैन मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, पर उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा अभी नहीं करूंगा। आई विल कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस टॉक अबाउट what is matter I have discussed. Now let me come to space and time, and then the other three dravyas, what are the scientific ideas about that. So space जो अपने कहते हैं कि वो it gives only place for things to जिसको अवगाहना कहते हैं। तो space is non-interactive. It is not something which gives space, but it can be of three types. Space can be flat, spherical, or hyperbolic. So this is something different from what our agam says, and also it affects mass and motion. तो आकाश, मास और गति तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. This is what science says. And I think Agam doesn't agree with this. Agam says it only gives space and it is non-interactive. Whereas science says that it is interactive
it interacts with mass, and it also motion depends on this thing, space, whether it is flat, spherical, or hyperbolic. When space is flat, then the light travels in a straight line. When space is spherical, the light travels in a sphere and it closes on itself. When space is hyperbolic, then a light can escape. And of course, as I mentioned, space, time, and matter and motion, they are all affecting each other. And they, of course, talk of space-time continuum. So you see, what we have learnt about space from science is much more than what is written in Agam, और जो प्रोफेसर वीर सागर जी ने बताया वो तो बहुत सिंपल डेफिनेशन थी. So I show here three types of space. One is positively curved, that is spherical. One is flat. We live in a flat universe because light travels in a straight line here. And then this is negatively curved universe. So space here is curved. I think there is a need to connect our agamic ideas with this kind of things. And then, of course, science says that space, even though it may be flat, when there is mass is present, like this Earth is present, it becomes curved. तो जैसे सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, it is not because of a gravitational force as Newton said, but it is because the space gets curved. It keeps on going round and round because of that. Of course, we use Newton's laws of gravity to make calculation, but what is the cause? See, Newton only said how it works and how to quantitatively calculate this force. But why it is so was told by Einstein, that space itself gets covered. And there are many good ideas here. This is the fabric of space. We can say Pradesh or something like that. We can consider it to be equivalent to that. और ये जो मास इसमें रखी है इससे कर्व हो जाता है, और मास जितनी भारी होगी उतना कर्वेचर बढ़ेगा. तो ये जैसे फ्लैट स्पेस है ऐसी, इसमें हमने जैसे सूर्य को रखा तो ये ऐसे कर्व्ड हो गई, और इसमें हमने न्यूट्रॉन स्टार जो इससे भी बहुत बड़ा और भारी है और कॉम्पैक्ट है उसको रखा तो और भी ये कर्व्ड हो गई, और उसमें हमने ब्लैक होल जो और भी भारी और लाखों सूर्यों के बराबर है उसको रखा तो ऐसा हो जाता है. और ये इससे वार्म होल उत्पन्न होते हैं. वार्म होल का मतलब यहाँ आप एक पार्टिकल रखो तो वो यहाँ चले जाएगा. तो ये काफी सिमिलर है अपने जो त्रस नाली कहते हैं कि जो जीव यहाँ होता है वो दूसरे लोक में चला जाता है एक समय में. ये इस प्रकार की अवधारणा है. इन वन ऑफ माय पेपर्स आई ट्राई टू फाइंड सिमिली बिटवीन वर्म होल्स एंड आवर Krasnadi, but this is again a topic where much work is required. But what I want to point out is that space is not as simple as is mentioned in the Agams, and science tells you much more about the properties of space than what is written in Agams. Then, of course, light is also affected by mass. जैसे ये दो डिस्टेंस स्टार्स हैं वो अपने को स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे पृथ्वी से अगर देखें तो, पर अगर बीच में सूर्य आ जाता है तो ये स्टार इसके पीछे हैं, परंतु ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण ये स्टार हमको यहाँ दिखेंगे. इतने दूर हैं ये सूर्य के बिल्कुल पीछे, हमको विजिबल नहीं है, सूर्य ने उसको कवर किया हुआ है, but because of bending of light we see these stars somewhere else. So you see, space is very complex phenomena. It is not as simple as mentioned there in the Agams. So now I come to another aspect of it, that is the special theory of relativity. I don't think any of these things are also mentioned in the Agams.
Minkowski tried to relate space and time. And space, time, speed, and mass is related, as I mentioned already. And as an object, this is, I think, what is the crux of special theory of relativity. Many of you be knowing it, but just for sake of completeness, I want to mention that an object approaches the speed of light, the object's mass becomes infinite, and so does the energy required to move it. Therefore, it is impossible for any matter to go faster than the speed of light. तो ये भी एक लिमिटेशन है जो हमको विज्ञान के द्वारा ही समझना पड़ेगा. And this has been experimentally, shown to exist. This is not just a hypothesis. All this bending of light, what I said, due to mass and constancy of speed of light, is all well established scientifically. Now, this we discussed before, energy and matter are the same. So there is a limit to the velocity of objects, or not only objects, there is a limit to the information transfer. Information also cannot be transferred with any velocity higher than that of light. मतलब आप instantaneously कुछ भी लोग के बारे में नहीं जान सकते. It has a limitation. So there are two consequences of this phenomena of maximum speed of light. One is time dilation, that is, time moves slowly in a moving system. अगर speed बहुत ज्यादा है तो time रुक जाएगा. At the speed of light, that is 3 into 10 to power 8 meters per second, time doesn't move at all. And the other thing is physical contraction, that length it decreases when a body moves. So these are the phenomena we have learned out of scientific investigation of theory of relativity. तो मैंने पहले मैटर के बारे में बात की, कई नई चीजों को समझा हमने विज्ञान की दृष्टि से. फिर मैंने स्पेस के बारे में बात की. अब थोड़ा सा टाइम के बारे में भी अपन समझ लें. टाइम के बारे में जैसे श्वेतांबर और दिगंबर धारणाएं अलग अलग है, वैसे विज्ञान में भी कई धारणा अलग अलग है. पर मोस्ट साइंटिस्ट हु वर्क ऑन टाइम टेल that time is a construct of mind. वैसे time doesn't exist as a real. So they talk of, I think, psychological time, that as we observe a change, then we think there is something like time, but there is no nothing, no real like time. फिर एक अब व्यवहार नए और अपन जो निश्चय नए से भी इसको समझने का प्रयत्न कर सकते हैं. एक सेलेस्टियल टाइम है, ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ. 24 घंटे का दिन रात होता है, 365 दिन में ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है. दिस इज नॉट रियल टाइम. ये काल नहीं है, ये जस्ट मेजर ऑफ टाइम है. और एक स्टैंडर्ड टाइम है जो आपने दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में एक सीजियम क्लॉक, सीजियम 137 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसके द्वारा एक निर्मित क्लॉक है जो स्टैंडर्ड टाइम देती है. और एक टाइम डिलेशन जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट टाइम. टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव. सो ये कई अवधारणाएं हैं, और आई थिंक दिस इज अनदर टॉपिक ऑन विच वी शुड वर्क. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग aspects what I have learned, I have summarized in this slide about time, and that is, time is not samay. What I'm talking is of kal. That time does not exist by itself. Only it exists in other dravyas. It is absent by itself. It has no existence. But when anything else is present, then time appears in it. तो मैं अभी ये थोड़ा समझने के लिए, मैं एक आचार्य हैं यहाँ पर, अजय सागर जी महाराज, उनके पास गया था. तो उन्होंने मुझे कहा कि तत्वार्थ टीका पढ़िए सिद्ध सेन गणी की, उसमें लिखा हुआ है कि टाइम और द्रव्य ये सब एक ही हैं. जैसे साइंस कहती है, टाइम इज द इंटरनल नेचर, अंतरंग पार्ट है द्रव्य का, और स्पेस इज द एक्सटर्नल पार्ट और बाह्य पार्ट है द्रव्य का. ये मुझे अभी तक रेफरेंस मिला नहीं, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट.
लेकिन this will be very interesting because it will take us closer to the theory of relativity. तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है अपने ग्रंथों में जिस पे हमने चर्चा नहीं की है और जो हम छोड़ देते हैं, पर जिसमें बहुत सारा गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है. एंड आई थिंक वी ought to work on this these ideas. Then I found I came to another conclusion by studying all this literature that time acts on every other द्रव्य. जीव पर एक्ट करके it brings the phenomena of birth, aging and death. पुद्गल पर एक्ट करता है तब it brings ट्रांसफॉर्मेशन, उत्पाद एंड व्यय. आकाश पर एक्ट करता है, स्पेस पर, एंड इट ब्रिंग्स द phenomena of simultaneity और sequential occurrence of events. जैसा कि जनरल ये theory of relativity कहती है कि velocity and all this depends on the acceleration and so on. Motion parameters जो हैं they depend on the frame of reference, the inertial frame of reference. और एक्टिंग और धर्मास्तिका और धर्मा it brings out the phenomena of motion, and acting on adharma it brings out the phenomena of rest. So time is actually the most powerful thing, and it will be no exaggeration to say that it is a universal force which acts on everything else. तो इन विचारों पे आप लोगों के कमेंट्स जानना चाहूंगा. I think there is lot of things to work further. Now I come to the shaking ground. ये तीन जो मैंने बताया आपको, मैटर, आकाश और समय, इस पर तो विज्ञान ने बहुत काम किया है. बट जब कॉन्शियसनेस के बारे में आते हैं, then I think विज्ञान is lagging behind. That is where agams can guide vigyan. I think that is another topic of further work. I'll try to quickly summarize this thing. Question arises in scientifically, actually nowadays many scientists believe that there is something like consciousness and you cannot explain certain phenomena without resorting to the existence of consciousness. और ये जो TDVP मॉडल जो पोखरना साहब डिस्कस करते हैं, इसमें कॉन्शियसनेस का प्रमुख रोल है. But the questions are, is there one universal consciousness or there are many? One Brahma or each Jeev has its own consciousness? Is there a hierarchy of consciousness? And where is consciousness located? Brain is the seat of consciousness, but our Agam says the whole body is the seat of consciousness. Or is it throughout the universe as Vedanta says? What they propose is a Chidakash, a universal consciousness field which fills the whole universe. तो इसमें जैन आगम की सहमत नहीं है about this universal field of consciousness, and I think this is another very important topic where we ought to work and try to understand. The only detailed theory about consciousness, the materialistic theory, which I have come across, is given by Penrose. Of course, he is a Nobel laureate, so we have to be careful in criticizing him. But I think this is a very incomplete theory. It is a Penrose and Hameroff model. They have reduced consciousness to simple decision-making process. Actually, our consciousness as defined in Agams is very involved and has many other properties of Gyan and Karma and all this come into play. But what he says, it is the phenomena of making decision. And he invokes quantum mechanics. He says it is a quantum phenomena because neurons are too big to account for consciousness. Inside neurons, there are cycloskeleton and tubulins and then microtubules. And microtubules are only 25 nanometers in diameter. So that is where quantum mechanics comes into play. ये मैंने पिक्चर दी है यहाँ पर न्यूरॉन्स के, ट्यूबुलेंस के, माइक्रोट्यूबुलेंस के, और यहाँ आते आते one can make a decision.
So subjective reduction occurs when an observer measures a quantity in a quantitative system. The system is not in a specific state, but in a superposition of possible states. So there are a lot of choices available. And then when the choice is made, then a decision is made. That is how he explains this Penrose and Hameroff model, which is called OR-CHAR model, that is orchestrated things, how decision is made by neurons. I have compared here materialism, biocentrism, and Jainism as far as consciousness is concerned. So materialism, that means scientific theory, is that brain is a material thing and neurons are there, and mind is an emergent property of the brain. And then, of course, I talked about synapses, tubulins, and etc. So consciousness is a property of mind emerging spontaneously out of matter. Biocentrism, of course, the Vedantic theory says that energy condenses into matter. They resort to Einstein's equation I equal to mc square. And consciousness is energy, so matter is condensed consciousness. So everything the universe is consciousness, and all material is produced from consciousness because a lot of energy is there, and energy can be converted into matter. Whereas you are all familiar with Jainism, so I will not go into much detail, but we say that it is eternal, self-supporting, that is Atma and consciousness, self-luminous, self-existing, all-knowing entity, and activity of Atma uses mind, brain, and sensory organs as tools, as determined by individual karmas, and in instantaneous communication with Bodhi field throughout the universe. This I have borrowed from Vedantic thing, and a detailed description is given by our friend Shishir Roy in his book. So we try to make a model. There is a pure Atma and it is infinite Chetna and so on. And when it is shrouded by karma, then Chetana, mind, brain, and sensory organs, they all come into play, and their faculty is restricted. So some mathematical model can be developed based on this principle. I don't know, Anil Kumar Saab, can I take a few more minutes, or how we are doing with? हाँ साहब, लीजिए साहब. हाँ, अभी है टाइम साहब, 10 मिनट. अभी मेरा तो नया. हाँ. तो अब जो है विज्ञान जो है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, that you cannot determine all the parameters like position and momentum or energy and time. It talks of Planck length, which is 10 to minus 35 meters. That is, it can be equated to one Pradesha, for example. And it talks of Kalanu type of thing, Planck time, which is 10 to minus 44 seconds. So there are a lot of limitation to our knowledge scientifically also, because we can only see limited part of the universe. That is, we can see only 46.5 billion light years. That is about 10 to 23 kilometers. Restricted because light, as we mentioned, light has a limited speed, and universe was formed 13 billion years ago. So I think we can only see this much. Of course, when the universe was very compact in the beginning, as proposed in Big Bang theory, which of course Jane Shrishtivar does not believe, then of course we can go a little back, and I think a lot of work has been recently seen up to galaxies and been seen which are as old as 8 billion years and so on. Now, now comes Anekantvad and wave particle duality. They talk that wave is not a particle is not a wave, and wave is not a particle. There are two forms of something, and that is where our Anekantvad comes into play. There's nothing like a particle. It is a wave at the same time. Only when one measures it, it appears either as a wave or a particle.
Now, this has been, a very fundamental experiment has been conducted, the double slit experiment. So it changes its behavior. This is the two conclusions of this work. One is that there is nothing like a particle, nothing like a wave. Only when you measure as a particle, it appears as a particle. If you measure as a wave, it will appear as a wave. और दूसरा ये है कि it changes its behavior when it is watched and not watched. इसको आप देखेंगे तो इसका behavior अलग होगा, और इसको आप नहीं देखेंगे तो इसका behavior अलग होगा. और ये एक famous experiment है कि फोटोन जो है वो पार्टिकल है या वेव. एक चर्च में एक विंडो थी, तो ये जो विंडो में से लाइट आती थी सूरज की, तो एक स्पॉट बन जाता था. पर कुछ समय बाद में वो जो ग्लास का जो ये सीलिंग था, इसमें एक छेद और हो गया, तो लोग सोच रहे थे कि 2 स्पॉट दिखेंगे, लेकिन ये स्पॉट सब गायब हो गए और इस प्रकार का फिनोमेना दिखा. एक लाइन डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, as produced by wave nature of light. So this is how the wave nature of light was discovered, and this is the double slit experiment. एक लैंप लीजिए, ये 2 स्लिट है यहाँ एक स्क्रीन में, लाइट इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है. आपने यहाँ डिटेक्टर रखा तो ये लाइट और तरह से बिहेव करेगी, और डिटेक्टर को हटा दो तो यहाँ स्पॉट बन जाएगा. डिटेक्टर को रखा तो यहाँ ये ऐसा पैटर्न बन जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न. तो ये एक काफी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, बट इट इज द बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, that electron can be a wave, it need not be a wave. अपने जो सप्तभंगी के हिसाब से, it can be both a wave and a particle. It can be indeterminate. We don't know whether it is one or the other or something else, and so on. So this matches very well this quantum physics with our saptabhangi. And this is what I wanted to show. This is the famous thought experiment by Schrödinger, who gave this wave theory of matter. What he says that the observer and the object, they coexist. Object होता ही नहीं है जब observer नहीं होता है, और जब observer होता है तभी object जो है वो exist करता है. So Einstein was very, amazed at this kind of thing. He, metaphorically, he said, "Oh, if I close the eyes, then moon doesn't exist." Is that right? I mean, of course, it doesn't happen in classical objects like moon, but it happens in subatomic particles. And there's an experiment that it is indeterminate whether a cat is alive or dead if it is closed in a box, and so on. So we can discuss this a little more. But the point of my slide is to show that scientifically also they say observer and object, they coexist. They can't exist separately. Now I come to this last topic, medium of motion. आप कहते हैं कि एक medium of motion होता है, पर इसके लिए एक experiment किया गया था 100 साल पहले करीब by Michelson and Morley, and they showed that it is a Greek idea of this luminiferous ether, that the whole universe is filled with the ether, and that is what probably is nearest to what we say that there is a dharmastika. But he did this experiment. ये experiment इस प्रकार का था, एक लाइट बल्ब लिया और ये इसको एक मिरर से डिवाइड किया 2 भागों में, और उसको 1 साल तक पृथ्वी पे रखा, मरकरी पूल पे, ताकि कोई इसका एंगल वगैरह चेंज नहीं हो. और what he was hoping कि अगर, एक मिनट, what happened to this? कि अगर ये यूनिट जाएगी और वहां पर ईथर है, तो अगर ईथर ये चल रही है तो एक बार ये पृथ्वी से सूर्य की ओर जाएगी किरणें,
तो अगर ईथर आ रही है तो उसका रेजिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और एक बार सूर्य से पृथ्वी की ओर आएगी तो अगर ईथर मूव हो रही तो उसकी वेलोसिटी में वो ऐड हो जाएगी। तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न इस प्रकार का बनेगा जैसा यहाँ दिखा हुआ है, ये ब्राइट एंड डार्क। तो ऐसा कुछ पैटर्न मिला नहीं, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि देयर इज नथिंग लाइक ल्यूमिनिफेरस ईथर, ईथर डजंट एग्जिस्ट। तो उसके बाद में ये आइडिया कि एक मूविंग ईथर है, that Michelson and Morlow they proved that it doesn't exist. So, or what is the medium of rest? I don't know. Can it be inertia, or is it the responsible for Newton's law of motion, जो कहता है कि a thing at rest continues to be a thing at rest all the time unless it is disturbed by some force or given some acceleration. So, आप देखिए कि ये जो तीन चीजें हैं, कॉन्शियसनेस, अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, इसके बारे में विज्ञान बहुत कम जानता है, इसको मानता नहीं है। और जो तीन चीजें हैं, आकाश, पुद्गल और समय, उसके बारे में विज्ञान ने बहुत काम किया है। एंड एक्चुअली वी कैन अपडेट आवर आगम्स by adding these properties of what we have learned from science. तो इसमें कई विद्वानों ने काम किया है। I could not quote everybody's work, कचारा साहब, डॉक्टर एल.सी. जैन, पोखरना साहब, and so on. But what I wanted to bring out is that it is not proper to discard our scientific information and say science is not necessary. एक्चुअली अगर राइट श्रद्धान पैदा करना है तो हमें वी हैव टू रिसोर्ट टू साइंटिफिक स्टडीज वेयर वी हैव लर्नड एक्चुअली मच मोर देन गिवन इन आगम्स, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड मैनी फिनोमेना, एंड आई थिंक दिस रियली क्रिएट्स आवर फेथ दैट दीज थिंग्स रिटन इन आवर आगम्स आर करेक्ट. Whereas the three other aspects, Dravya, what I talked about, consciousness, adharma, and dharmastika, very little is understood scientifically, and that is where I think we should take agamic concepts and guide scientific investigations. So this is all I wanted to little bit provoke and say whether we can work on these ideas. I think GAS has so many learned scholars, and I think we can make some headway if we jointly try to do something. Thank you very much. I'll close here. बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मेरा बीच में इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, पूरा नहीं सुन पाया, लास्ट का कुछ पार्ट सुन पाया, लेकिन अभी इस बीच में मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उनसे लगता है कि मैं कुछ कोप अप कर सकूंगा। तो ये सबसे पहले कछारा साहब ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं,